Hello students, good morning. Today we'll start science of class 9th. Today we will learn about motion, which is the 8th chapter of our syllabus. Now, first of all, we see in our surroundings different type of activities like running the boy, running cars, flowing the water, and blowing the winds. These are in motion, but first of all, what is motion? Before motion, we will learn what is physics and definition of physics. जैसा कि हमारा चैप्टर के ऊपर मोशन है, तो पहले हम क्या करेंगे कि मोशन हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? फिजिक्स के अंदर। तो डिफिनीशन क्या है फिजिक्स की, हम उसको देखते हैं शॉर्ट। Physics is the study of nature and its laws. The simplest definition of physics is physics is the study of nature and its laws. There are a number of definitions of physics in other terms, but the simplest definition of physics is the study of nature and its laws. Physics क्या है? नेचर और उससे जुड़े जुड़े उसके लॉज हैं जो गवर्न करते हैं नेचर को, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। द फिजिक्स इज द वर्ड फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड फ्यूसिस व्हिच मींस नेचर। क्लियर? नाउ आवर टॉपिक इज मोशन। वी विल लर्न टुडे 3 पॉइंट्स: मोशन, रेस्ट एंड रेफरेंस पॉइंट। As in earlier classes, we learned in chemistry there are 3 states of matter. पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? 3 स्टेट्स होते हैं। These are solid, liquid and gas. But in physics there are 2 states of object. First is rest and second is motion. फिजिक्स में ऑब्जेक्ट की कितनी स्टेट होती है? नॉर्मली हम मानते हैं 2 स्टेट। फर्स्ट स्टेट को क्या कहते हैं? रेस्ट, और सेकंड स्टेट को क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो व्हाट इज रेस्ट? एस द डेफिनेशन इज एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surroundings. सिंपल क्या था? An object is said to be in rest if it does not change its position with respect to surroundings, or we can say that with respect to reference point. Any object, कोई भी ऑब्जेक्ट हुई रेस्ट में, जब वो अपने सराउंडिंग्स के किसी रिफरेंस ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होगी, तो हम क्या करेंगे? यह कैसा है? रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल ट्री, वी सी दैट दिस इज आवर होम, and in front of our home there is a tree. We always found that the position of this tree, which is like 20 meters towards east, remains same. मान लो हमारे घर के सामने क्या पेड़ है, अब पेड़ हमारे घर से ईस्ट साइड में कितना है? 20 मीटर है। वी ऑलवेज फाउंड दैट द ट्री इज ऑलवेज 20 मीटर अवे इन द ईस्ट डायरेक्शन। हियर आवर होम इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, होम इज रेफरेंस पॉइंट, and position of tree does not change. Hence, we can say that the tree is in rest. The next example, we can take mountains.
Mountains also does not change its position, means mountain is in rest, means that if any object does not change its position with respect to a reference point or its surroundings, then it is called in rest. For example, in the example, the book lie on the table. The book lie on the table. This table and this book. Book does not change position with respect to this table. Hence, the book is in rest with respect to this table. बुक क्या कर रही है? अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है. जब बुक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो हम क्या करेंगे कि बुक किसमें है? रेस्ट में. क्लियर? सिंपल सा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे? वो ऑब्जेक्ट कैसा है? वो रेस्ट में है. क्लियर? नाउ सेकेंड इज मोशन. सेकेंड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोशन. मोशन क्या है? When any object changes position with respect to surroundings or reference point with time, then it is said to be in motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो अपने रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को विद द पासेज ऑफ टाइम चेंज कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा है? ये मोशन में. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड फ्लाई इन द स्काई. एस suppose that is a bird. We see the position of this bird is here. Suppose that you are standing here, you see after few minutes it reaches to this point. With respect to you, the bird change position. मानो आप यहाँ खड़े हो, आप इसको देख रहे हो, अब कुछ मिनट बाद क्या होगा? ये आपके पास से कहाँ आ गई? यहाँ पे आ गई. तो यहाँ क्या होगा कि टाइम के चेंज के साथ इसने आपके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज किया. तो कैसा होगा ये कि बर्ड किस पोजीशन में है? मोशन में. फॉर एग्जांपल, रनिंग वाटर इन द रिवर्स. रनिंग वाटर इन द रिवर्स. हाउ? देयर इज अ रिवर, सपोज दैट इज flowing, and this piece of paper is a piece of paper. Piece of paper. You are standing here. Person. This person looks at this sheet of paper. After few minutes, when he again tries to look, he found that this paper reaches to position A to position B. Means it changed position from A to B. It means that it is carried by the water. Means the water is flowing because we do not apply any force on this paper. यहाँ क्या है? एक पर्सन है. पर्सन क्या करता है? नदी में पड़े हुए कागज के टुकड़े अपने सामने रखता है. कुछ समय बाद क्या पाता है? टुकड़ा अपनी पोजीशन को ए से चेंज करने की पूछ रहा है. चूंकि हम क्या कर रहे हैं? हम तो पेपर पे कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं. अर्लियर क्लास में हमने क्या किया? फोर्स एंड प्रेशर में क्लास 8 में विदाउट फोर्स एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन. बिना फोर्स लगाए कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है. Here the force is applied by the water. Means water change position. With which the paper also change position. Means water is flowing. We see that when it starts
arises, the leaves and other things like small straws change position from one place to another place. In that time, we say that the leaves, the straws, and other things are in motion. In short, motion is the change of position by an object with respect to reference point or its surroundings. मोशन कब होगी? जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या फिर स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करेगा. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट. A reference point is a place or object used for comparison to determine if something is in motion. Example, bridge. इसको समझते क्या करना है? For example, to understand the reference point, this is a piece of stone on the ground here, and you say that the house of your friend is 20 meter away or 70 meter or 100 meter away from this stone, and another friend said that his house is 120 meter away from this stone, but if we remove this stone, then how can you judge the distance or the position of these two houses? Means, to locate the position of any object, we have to choose a certain point with respect to which we determine the position of that object. So, with respect to which object which is generally in rest, we take that as reference point. Hence, in this condition, this stone is reference point. क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमिन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए. It will be breeze, trees, or anything means which is in stationary or position. With respect to this position, we determine, we compare to the other's position. If any object is changing its position with respect to this stationary object, then it is said in motion. But if the object does not change its position with respect to this point, which is reference point, this stationary object, then it is called in rest. Clear? In normal, rest position reference point. Rest means क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मींस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? वो रेस्ट में. अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो क्या कहेंगे कि मोशन में है. और रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम एनदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिटरमिन करते हैं. क्लियर? Now we will discuss the next topic in next video.